Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hariba, 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 Hariba. Jai Om Vishnupad Paramahamsa, Parivrajacharya, Astotra Satat Srimad, His Divine Grace, His Acharya, Srila Abhacharya Navinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa, Parivrajacharya, Astotra Satat Srimad, His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Kodi Vaishnavini Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gatadhar Si Vasadi Si Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Girigopathan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Jagannathpuri Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vena Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi.
All glories to the sum of devotees. All glories to the sum of devotees. Glories to the sum of devotees. All glories to Sisi Gaura and Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyamsa Tato Jaya Mudirai Nastapaye Subhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttaman Sloke Bhakti Bhavaiti Naistiki. So this morning the Srimad Bhagavatam class is 10 Canto, chapter 70, text 17. Is that correct? Text 17, yeah. Lord Krishna's daily activities. That is the title of this chapter. Sudamakyam sabam save Vrishnibi parivaritaha Pravisarya nivistanaham Nasantyanga sadumayaha. Can someone try? Someone else? Any Mataji? Okay. Word for word translation. Then translation and purport. This by the followers of Prabhupada or by Prabhupada himself? This chapter was translated by Prabhupada or followers of Prabhupada? Disciple. So, word for word translation and purport by the disciples of ISKCON founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. No, by glorifying Prabhupada, we get purified, okay? Sudamakyam, known as Sudama. Sabam, the Royal Assembly. The Royal Assembly Hall. Survey by all. Vrishnibi, the Vrishnis. Parivaritaha, attended. Pravisat, he entered. Yat, which? Nivistanam, for those who have entered. Nasanti, do not occur. Anger, my dear King Parikshit. Sat, the six. Urmaya, waves. Translation: the Lord, attended by all the Vrishnis, will enter the Sudama Assembly Hall, which protects those who enter it from the six waves of material life. Dear King, please responsibly repeat. The Lord, attended by all the Vrishnis,
Krishnas would enter the Sudama Assembly Hall, would enter the Sudharma Assembly Hall, which protects those who enter it enter it from the 6 waves from the 6 waves of material life. of material life. Dear King. Dear King. Purport. Srila Prabhupada writes, quote, "It may be remembered that the Sudama Assembly House was taken away from the heavenly planet and was re-established in the city of Dwarka. The specific significance of the assembly house was that anyone who entered it would be free from the 6 kinds of material pangs, namely hunger, thirst, lamentation, illusion, old age, and death. These are the waves of material existence. And as long as one remain in that assembly house of Sudama, he will not be affected by these 6 material waves," unquote. In this regard, Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti explain that when Lord Krishna will exit separately from each of his many palaces, each individual form will be visible to the persons present on those particular palace grounds and to the neighboring residents, but not to others. Then, at the gateway of the Sudama Assembly Hall, all the forms of the Lord will merge into a single form, and thus he will enter the hall. Okay. There are people Hare Krishna. There are people who don't know. Who are those who need it? Okay. यहाँ में कितने भक्तों को ट्रांसलेशन का जरूरत है? Okay, फिर we don't do. Yeah, I was thinking of many devotees watch online also. Yeah, online. It's okay. Okay. I was just wondering because all of these guys, no English, yeah. They're English guys. So, yeah, considering online yeah. Okay. भगवान कृष्ण सारे वृष्णियों के साथ सुधर्म सभा में जाते थे और जो भी सुधर्म सभा में जाता था वो 6 भौतिक वेव्स लहरों से बचता था। डियर हे राजा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको समझना चाहिए कि ये जो सुधर्मा सभा है ये स्वर्ग लोक से लाया हुआ था और द्वारका में स्थित किया था। वो ये सुधर्मा सभा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था कि जो भी इस सुधर्मा सभा में रहता था तो उसको भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु त्रस्त नहीं करता था। जब तक वो कोई सुधर्मा सभा में रहता था ये 6 भौतिक पीढ़ियों से मुक्त रहता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी बोलते थे कि जब भी भगवान कृष्ण अपने अलग अलग महलों से निकलते थे तो आसपास के लोग ही सिर्फ कृष्ण को देख सकते थे, एक ही रूप को। और जब कृष्ण सुधर्मा सभा के पास आते थे तो 16,108 रूप जो है एक होते थे और सुधर्मा सभा में एंट्री करते थे। हरे कृष्ण। Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Saksod Malitam Yena Tasmai Se Guru Vedam Suchetaya Mano Vistam Stafi Tam Yena Bhutali Swayam Rup Kadamaya Dadati Sa Padantika Panchakalpatari Vyacha Kripasandhya Vyacha Patitanam Bhavana Vaishnavi Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutali Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirbhase Satsvanya Vadi Pasatati Tatari Pandesi Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Buddhaya Puskavantu Chita Chandatamon
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasudeva Gaur Bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama Ram, Hare Hare Rama, Ram, Rama Ram Rama Ram, Hare Hare. Hare. So, first I'd like to thank all of you devotees here, especially the management headed by Acharya Ratna, for giving me the hospitality, the privilege to be able to associate with all of you for many days. Today I'll be going back to Mayapur, Krishna willing. The Prabhupada says that when we make our plans, we should not make it as if we are the controllers. He specifically suggested when you make your plans, say that something like, I will do this if Krishna permits. हरे कृष्णा. I will come if Krishna permits. तो मैं सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मैनेजमेंट के भक्तों ने जो मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके संग में बहुत दिन यहाँ रहा. तो आज मैं वापस मायापुर जा रहा हूँ, कृष्णा विलिंग. तो हम जब भी कुछ प्लान करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमको समझना चाहिए कि हम नियंत्रण करता नहीं है. तो हमको जब भी प्लान करते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि कृष्णा अगर चाहे तो, कृष्णा अगर परमिशन दिए तो मैं ये करूँगा. So, in respect to this very text, this is very relevant, especially the first part of the purport is very relevant. First paragraph of the purport is very relevant to our everyday experience. तो पहला जो तात्पर्य है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए लागू होता है. Because it's talking about practical things that we all face: lamentation, old age, hunger, thirst, and all these things. And nobody can say, well, I've not conducted a quantitative research, so I cannot say nobody. I've not seen anybody who says that he doesn't feel hungry at the appropriate time. तो हम देखते हैं इस जगत में सबको ये कष्ट झेलना पड़ता है. भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा, मृत्यु. मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं जो बोलता है कि मुझे कभी भूख नहीं लगता. इस दुनिया में सबको भूख लगता है. So, these 6 pangs of material existence, the 6 impulses of material existence, they are the defaults of our existential situation in our conditioned life. We feel hunger because there is a lot that goes on within the body that those who do not do biology or whatever, they may not even know what is going on in their body. तो इस भौतिक जगत में हमको इस 6 कष्ट भोगना पड़ता है. भूख है, प्यास है, शोक है, मोह है, बुढ़ापा है, मृत्यु है. हम देखते हैं कि रोज़ हमको भूख लगता है. जिनको बायोलॉजी पता नहीं, उनको पता नहीं रहेगा क्या चल रहा है शरीर में, लेकिन ये भौतिक जगत में ये होता ही है सबको. Hunger is a symptom that your liver is working. Hunger is a symptom that your liver is working. Your liver. ओके, अगर हमको भूख लग रहा है इसका मतलब है हमारा जो लीवर है काम कर रहा है. When you are really sick, you have a liver problem, hunger doesn't come. जब हम बहुत ही बीमार रहते हैं और हमारा लीवर काम नहीं करता तो भूख नहीं लगता हमको. So, someone may be sick, but if they are hungry, the doctor is happy because they say, okay, at least one problem is ruled out because the liver is the seat of all activities in the body. तो हम जब बीमार रहते हैं और हमको भूख लगता है तो डॉक्टर खुश होते हैं कि एटलीस्ट लीवर काम कर रहा है. अगर लीवर काम नहीं कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम उधर से हो सकते हैं. And if someone is sick and is not feeling hungry,
we should feel worried because it's getting close to Yamaraj's gate. अगर अगर कोई बीमार है और उसको भूख नहीं लग रहा है तो हमको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है वो यमलोक के द्वार के पास जा रहा है वो. So sometimes we get worried that I just ate. Why am I feeling hungry? You should be happy that you just ate and you're feeling hungry. It means your liver is working very nicely. कभी कभी हम देखते हैं कि प्रसाद लेते हैं और फिर भूख लगता है, तो जब भूख लगता है तो हमको अच्छा लगना चाहिए, विश्व हमको खुशी होना चाहिए क्योंकि हमारा लीवर अच्छा काम कर रहा है. Hunger is very natural, and this body is set up in such a way that there is, when we eat, there is mastication. Food is sent to the stomach through the esophagus. In the stomach, there is hydrochloric acid that helps with digestion. And so assimilation goes on with the help of the small intestines, absorption. And, most of the things we eat, they are absorbed, and some are, excreted. Some are not useful to the body. But the point is that the process of eating is not a permanent situation. It's a continuous process. तो जो खाना है वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है. हम देखते हैं मुंह से हम खाना लेते हैं, फिर पेट में जाता है, पेट में अनेक रसायनों से उसका कुछ रिएक्शन होता है, फिर बहुत सा चीज़ हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ चीज़ बाहर छोड़ देते हैं, और ये कंटिन्यूसली हमेशा चलता रहता है. So the body is designed that we are conditioned. We are conditioned. ये शरीर ऐसा बना है कि हम वी आर कंडीशन. कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंडीशन. जय श्री निताय गौरांग की जय. So, and Prabhupada used this term a lot, conditioned souls. हाँ, बद्ध जीव. प्रभुपाद ये शब्द कंडीशन बहुत बार यूज करते हैं, जिसका मतलब है बद्ध जीव. But what does condition mean to you? बद्ध मतलब क्या है? Yes, can someone give us an explanation? What condition means to you? Bound. Okay. Yes, anyone else? We cannot do whatever we like. We are bound by rules, laws. बद्ध का मतलब क्या है? हम जो चाहे वो नहीं कर सकते. Yeah. And who wants to be bound? Who likes to be bound? किसको अच्छा लगता है बांधा जाने में? I don't like to be bound. मुझे अच्छा नहीं लगता. And I've seen majority of people on the planet, they don't like rules. I also don't like rules. I would prefer to drive anywhere if I go into the express road in New York. But no, you are bound. You have to follow rules. लोगों को नियम कानून अच्छा नहीं लगता. सोचते हैं कि जो चाहे करूं, लेकिन ये दुनिया में जो चाहे नहीं कर सकते. आपको नियम कानून पालन करना पड़ेगा. So the dog is also bound, and the dog is also conditioned. And some psychologists have demonstrated the very concept of demonstrated some experiment to show the very concept of being conditioned. तो कुत्ता भी बद्ध है, और कुछ साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत पढ़ाई किया है वो चीज़ दिखाने के लिए. And basically it shows that someone or an embodied entity that is conditioned
may just be used to a particular situation. And even if okay, for instance, the experiment goes like this: a dog was caged or was bound, and then each time the dog owner brings food, he'll ring a bell. So the dog gets conditioned to the bell ringing and food. Each time he hears the bell, he starts salivating. तो एक कुत्ते को एक पिंजरे में रखा था और जब भी मालिक आता था तो उसको ये बेल रिंग करता था और अन्न देता था। तो धीरे धीरे वो उस सिचुएशन में कंडीशन हो गया, जब भी बेल बजता था तो उसका जीभा में सलाइवा आता था। So that experiment was conducted by Professor Pavlov. So Pavlov, he observed that the dog is salivating when the food is brought, along with the ringing of the bell. So he rang the bell without bringing any food. तो ये जो साइंटिस्ट था जो कुत्ते के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसने देखा कि जब भी अन्न आता है और बेल बजता है तो उसका मुंह जीभा में सलाइवा आता है। तो उसने बाद में क्या किया, बिना अन्न के वो रिंग बेल करना शुरू कर दिया। So although food was not there, the dog is conditioned to food accompanying the ringing of the bell. So also food was not there this time. He was salivating. तो बाद में देखा कि जब अन्न नहीं था लेकिन बेल रिंग कर दिया, फिर भी कुत्ता के जीभा में सलाइवा आने लगा, बिकॉज वो उस चीज के लिए कंडीशन हो गए। So this is the impact of conditioning on human behavior. और ऐसा भी चीजें मनुष्य के जीवन में भी होता है। Because we are conditioned, we don't seem to see things clearly, like the dog. हम बद्ध होने के कारण हम सब चीजें सही सही देख नहीं पाते। We get used to certain things, and if even that situation is not conducive or is not forthcoming, we just attach to the situation and we want to act on it. तो हम बद्ध हो जाते कुछ कुछ अवस्था में, और जो फेवरेबल है अनफेवरेबल है अलग अलग सिचुएशन में। So with hunger, if sometimes I found even in Bengal, where Bengal is like especially Navadvip is the hub of scholarship. But even in Bengal, even in Navadvip, to be a vegetarian is just a big thing. तो हम देखते हैं कि भारत में और बंगाल में, इवन नवद्वीप में जो कि स्कॉलरशिप का बड़ा ये है अड्डा है, उधर भी लोगों को वेजिटेरियन शाकाहारी बनना बहुत मुश्किल है। So someone may know that this is good for me, but because of the conditioning, they are not able to act on the good instructions of the sages, of the acharyas, of the spiritual master. बहुत लोगों को पता है कि ये शाकाहारी मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी वो शाकाहारी नहीं बन पाते। वो साधु का, शास्त्र का, वैष्णव का, आचार्यों का जो आदेश है वो पालन नहीं कर पाते। So we tend to eat whatever we see or whatever we like or whatever we used to eat. But the only thing that helps to decondition us is devotional service, devotional life. तो हम देखते हैं कि हम खाते हैं जो भी हमको अच्छा लगता है, जो भी दिखता है वो खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ से बद्ध है। लेकिन अगर बद्धता से मुक्त होना है तो एक ही चीज़ है, वो है भक्तिमय सेवा। So hunger is very natural, but we need to eat what is spiritually healthy to engender our devotional growth. तो भूख लगना स्वाभाविक है, तो हमको ऐसा अन्न खाना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है। And Krishna
makes some prescription in the Bhagavad Gita. और कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. He said, Patam Puspam Phalamtoya Yomi Bhakta Panashita. If we understand what Krishna wants to be offered, and we offer that, if even it's just a flower, a leaf, fruit, water, Krishna accepts, and we can take the remnants as prasadam and become purified. तो कृष्ण बताते उनको क्या चाहिए. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो हम भगवान को पत्र या पुष्प या फल या पानी प्रेम से अर्पण कर सकते हैं और भगवान को अर्पण करने के बाद हम वो ग्रहण कर सकते हैं. So Krishna is not asking us to go and, go and borrow money from the bank and come and make some sophisticated food for him, burger for him. He's asking very simple things. Why? So that we don't have excuses. तो हम देखते हैं भगवान ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत कुछ महंगा चीज़ नहीं मांग रहे. ऐसा नहीं कि हमको बैंक में जाना है, लोन लेना है और बहुत बड़ा कुछ भोग बनाना है भगवान कृष्ण के लिए. कृष्ण सिंपल चीज़ मांग रहे. सबके लिए संभव है. किसी को कुछ एक्सक्यूज देने का कारण नहीं है. So this very pang out of the 6 pangs of our existence, the pang of hunger is something that we can easily address. There's no complication. ये जो 6 पीड़ा है उसमें से जो भूख का पीड़ा है वो उसका हम हल निकाल सकते हैं. And the next test, or the next pang, taste. We all feel thirsty. For me, I can speak for myself. I drink at least 2 liters of water every day. And for me, if you want to starve me from food is fine, but I cannot starve from water. I prefer to die than starving from water. तो हम देखते हैं ये पहला है भूख, दूसरा है प्यास. तो हम प्यास से भी नहीं रह सकते. अगर मेरे बारे में मैं बात करूं तो मैं भूख सहन कर सकता हूं लेकिन प्यास नहीं सहन कर सकता हूं. पानी नहीं मिलेगा तो मृत्यु के समान लगता है. So taste is a natural impulse. It's a natural demand of the body, and some people try to deny the body of hydration, and that's a problem that comes along with that. तो ये प्यास लगना ये भी स्वाभाविक है और कुछ लोग वो पानी नहीं पीना चाहते और बॉडी को कठिनाई देना चाहते हैं. So we have this body, and every machine we have a vehicle. We need to take it to the mechanic, at least maybe at some point in time of the use of the vehicle. Otherwise, it will disappoint us. So this body also needs some maintenance, and just to give it appropriate food, say the food that is already offered to Krishna, because we are Krishnatarians. We are not just vegetarians. Food that is offered to Krishna, the remnants becomes prasadam. And so if we supply this body with prasadam and drinks that are offered to Krishna, I think we'll be doing a great service to the body. तो हम देखते हैं ये शरीर जो है गाड़ी के समान है. हम देखते हैं गाड़ी को भी मेंटेनेंस लगता है. कुछ समय बाद होने के बाद हमको सर्विस स्टेशन में मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है गाड़ी को उसका ठीक करने के लिए. वैसे शरीर को भी मेंटेनेंस का जरूर है और शरीर को भी प्यास लगता है, भूख लगता है. उनको प्रसाद देना चाहिए, पानी जो भगवान को ऑफर किया है वो लेना चाहिए. अगर ये हम नियमित रूप से करेंगे तो ये शरीर के लिए एक अच्छा सेवा है. So if you want to be healthy, you are all young people, one of the secrets is to drink water first thing you wake up from bed. तो आप सब नवयुवक हो तो सब नींद से जब सुबह उठते हैं
तो पहला चीज हमको करना चाहिए कि पानी पीना चाहिए, because water have to detox the body too. तो पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। And so if you're denying the body of water intake, you are inviting dehydration, and it has some terrible effects on the system. अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अलग अलग बीमारी भी शरीर में आएगी। So in taste, this pan taste is not just a bad thing, you know. सो ये जो प्यास लगना है, ये जो पीड़ा है, ये भी बहुत बड़ा तकलीफ का बात नहीं है, Because the body needs to be, to be fed, to be given some hydration. तो शरीर को ये कुछ खाना कुछ पीना देना जरूरी है। Lamentation. When we lose something, we lament. हम कुछ हम कुछ लॉस खो देते तो हमको शोक हो जाता है। Okay, for instance, I buy a new limousine. Maybe someone gave me money and I bought a Ferrari. Gold diggers, they like Ferrari, You know what that means? So you have a Ferrari and, you're posing around with a Ferrari, attracting people. And then the Ferrari had a terrible accident. You just barely saved your life. Everything is smashed. What happens? Lamentation. तो मानो कि आपके पास बहुत ही महंगी गाड़ी है फेरारी और बहुत ही सुंदर गाड़ी है, लेकिन बाद में एक्सीडेंट हो जाता है। आप कैसे तो बच जाते हैं, लेकिन पूरा गाड़ी फेरारी जो है वो पूरा चक्काचूर हो जाता है। तो उसका फिर आपको कैसे लगेगा? आपको शोक लगेगा। So lamentation is just natural. It's one of the pangs of material existence. Some bad thing happens, we lament. तो शोक करना ये भी स्वाभाविक है। कुछ गलत जीवन में कुछ होता है तो हमको शोक आ जाता है। Illusion means that we are accepting a rope for a snake, for instance. मोह का मतलब है ये अगर हम रस्सी को देखें और उसको सांप समझे। And in material existence, majority of people are in illusion. तो भौतिक जगत में अधिकांश लोग जो है मोह में है। I say majority of people because I'm careful in using words like everyone, because I've not conducted a quantitative research on everyone on the planet to jump into that conclusion that everyone. So that's why I said majority. मैंने सब लोगों के ऊपर रिसर्च नहीं किया, इसलिए मैं एवरीवन नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेजॉरिटी अधिकांश लोग ऐसा बोल रहा हूँ। It's a common thing in the political arena, in social life, and everywhere. People miscue language, abuse language, but scholars are very careful, because I have problem in correcting even some of my mentees. Some of them, are great learned scholars, and then I take them to task. When they say something like everyone, so I say, hey, did you conduct a research? And then so majority of people are in illusion on this planet, and that is one of the defaults of material existence. तो भौतिक जगत में अधिकांश लोग जो है मोह में है, ये भौतिक जगत का बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग है। Old age. It is only devotees, when you come to devotional life, you understand the Krishna consciousness philosophy, that you understand that, so all this stuff that I've been involved in is all Maya. तो ओनली सिर्फ हम जब भक्ति में आते हैं तो हमको मोह क्या है समझ में आता है, माया क्या है ये समझ में आता है, नहीं तो बाहर के लोगों को माया क्या है मोह क्या है समझ में नहीं आता। Tell me something. I like old age. Raise up your hand.
आप में से कितने लोगों को बुढ़ापा बहुत अच्छा लगता है? हाथ ऊपर कीजिए. I think I've not conducted the research, but I know that. Okay, let me say nobody. let me. Majority of people don't like old age. मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन मेरे अनुभव से अधिकांश लोग को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता. But we all have to pass through that process because in the Bhagavad Gita, Lord Krishna has already specified. He has already given us, prayer information. Dehi nosmi yata dehe kumaraya banam jara tata dehantara praptis dhirasta tanamuyat. He said we will pass through all this system from childhood, boyhood to youth to adult, old age, and the very last pang is death. तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं कैसे हमको सब स्थिति से गुजरना पड़ता है. देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे कि कौमार एज और बुढ़ापा और अंत में मृत्यु. But people don't want to hear the art of death. If you say, I remember some time ago, when I was younger, we are on the street doing Harinam, and we distributed some pamphlets, and one of these pamphlets is about the art of death. And so when some devotee gave it to one beautiful lady, he said, don't give me this. Give me something about the art of living, not the art of death. Who wants to die? तो लोगों को मृत्यु के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता. एक बार हम जब योग थे तो हरिनाम पार्टी में जा रहे थे, और हरिनाम पार्टी में हम एक पैम्पलेट बांट रहे थे, आर्ट ऑफ डेथ, मृत्यु का कला. तो एक माताजी ने जब देखा वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप आर्ट ऑफ लिविंग या वो ऐसा दे दो, या मृत्यु के बारे में मत बोलो. So this is the major problem in the material world. People don't want to recognize the fact that they will get old and they will die. तो एक और एक समस्या है भौतिक जगत में कि लोग समझ नहीं चाहते कि हम सबको बुढ़ापा आएगा और हमको मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा. I mean, I bet if you have a periscopic view of the situation, you will understand it's one of those situations we have. Also in the very future, we have defense mechanism or fighting. Fighting is because of what? We want to defend ourselves. Somebody may do something wrong, and when they are confronted, say they did get involved in illicit activity, and they are confronted, they deny. Trump is very good at that. I'm sorry. Trump is very good at that. तो हम देखते हैं कि जगत में कोई कुछ गलत चीज कार्य करता है और उसको हम पूछेंगे तो तुरंत पहला उसका उत्तर रहेगा वो स्वीकार नहीं करेगा. So people do ट्रम्प जो है बहुत एक्सपर्ट है इसमें. So people do the wrong thing. The first thing they are confronted. When they are confronted, the first thing is denial. No, I never did it. जब भी उसको अगर पूछा जाए तो पहला चीज लोग क्या करेंगे, वो अस्वीकार करेंगे. So denying death is just something natural because we don't want to die. We don't want to associate with that phenomenon. But we will all face death. साधारण लोग मृत्यु नहीं चाहते तो इसलिए वो उससे दूर रहना चाहते हैं. But it's very all described here, Sudama. This very transcendental hall. It's a place where when you go there, you don't have to bother about all these pangs of material existence. तो द्वारका में जो सुधर्मा सभा था इतना दिव्य था कि अगर कोई व्यक्ति उस सुधर्मा सभा में जाता था तो उसको ये 6 पीड़ा त्रस्त नहीं करती थे. भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु. ये 6 चीजें वो सुधर्मा सभा में जो भी रहता था उसको उसका पीड़ा नहीं होता था. That's something
really amazing, because imagine there will be no hunger, you will not be hungry, you will not feel thirsty, there will be no lamentation, there will be no old age, no death. Who wouldn't want to go there? तो मान समझो कितना दिव्य जगह ये। अगर इस जगह में ये 6 पीड़ा नहीं है तो उस जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। But that is basically the spiritual world. बेसिकली ये जो चीज है ये आध्यात्मिक जगत है। So sometimes people say, well, at least I know what I'm experiencing in this material world. Why should I go to a place why should I aspire to go to a place where I don't know what is happening there? The description of the activities of the spiritual world, they are all embedded in the Srimad Bhagavatam. तो आध्यात्मिक जगत का जो डिटेल्स है ये भागवतम में बताया गया है। We have trees, and these trees are wish fulfilling trees. आध्यात्मिक जगत में पेड़ है जो सारे वासना इच्छा पूरी कर सकते हैं। In the material world, it's completely opposite. You have a mango tree, you can only get mango from that tree. भौतिक जगत पूरा उल्टा है। जैसे भौतिक जगत में देखते हैं कि तो आम का पेड़ है, आम के पेड़ से सिर्फ आपको आम ही मिल सकता है। So, this first paragraph basically deals with this whole concept about the pangs, the material pangs, which we are highly subjected to and influenced. And the pangs have immense impact on our everyday existence. तो पहला जो तात्पर्य का भाग है वो षड ये जो पीड़ा है जो हमको हमेशा भोगना पड़ता है उसके बारे में कहा गया है। So in the second paragraph, it's mentioned that Sridhar Swami and Vishnu Chakravarti gave some explication of Lord Krishna's, the perception of people of Krishna, and those people basically are those who are in his residence of his palace and the neighbors. तो दूसरे तात्पर्य के दूसरे भाग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी बता रहे कृष्ण के बारे में और लोगों का कृष्ण का साक्षात्कार जो द्वारका में रह रहे उनके नेबरहुड में रह रहे। So Krishna has many palaces, and each of these palaces we have Krishna there taking care of business, and the residents of those palaces, they see Krishna, the neighbors also, they see Krishna, and that's it. तो हम देखते Nobody else sees it. So हम देखते हैं द्वारका में कृष्ण के अनेक अनेक महल है, हर महल में कृष्ण है और हर महल के वासी और जो नेबर पड़ोस के लोग हैं वो कृष्ण को देख पाते हैं। And now, each of the Krishnas from all of these palaces heads to the Sudama Sabha, Sultana Hall, and at the Sudama gate, all of these Krishna forms they merge into one. तो कृष्ण के 16,108 पैलेस है, महल है, तो सब महल से कृष्ण निकलते हैं और सुधर्मा सभा के एंटर होने से पहले ये 16,108 कृष्ण एक हो जाते और फिर कृष्ण अंदर जाते हैं। So this is another mystery of Lord Krishna. ये और एक रहस्य है कृष्ण के बारे में। But it's not amazing to the devotees because Krishna can do anything. तो कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भक्तों को उसमें कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। Krishna told Arjuna in the Gita that, with just a figment of my energy, I can create all of this. What do you want to see? Huh? Look at my yogic opulence. तो कृष्ण अर्जुन को बताते कि मेरा एक
अंश से मैं पूरा विश्व सृष्टि कर सकता हूँ, तुम क्या देखना चाहते हो मेरे? In the Mukta Charita, also during a discussion with the gopis and Subal, Subal had told Krishna that, hey, my dear friend, see, Kamchalata is one of the gopis. Subal said, Kamchalata, this gopi is full of mystic opulence, and we have seen it. We are friends, the gopis, they've seen the mystical opulence of Kamchalata. तो And you talk about that you have mystic powers. We want to see those mystic powers too. तो सुबल जो है कृष्ण को मुक्त चरित में ये कथा आता है कि सुबल जो है कृष्ण को बोल रहे हैं, हमने सुना है कि ये जो कमसलता गोपी है उनके पास बहुत ही मिस्टिक पावर्स, योगिक शक्तियाँ है, और आप बोल रहे हैं आपके पास भी योगिक शक्तियाँ है, तो हम आपकी योगिक शक्तियाँ देखना चाहते हैं. So Krishna responded to Subal that, see, I've performed so many mystical pastimes and you don't seem to see it. What can I do? कृष्ण बोले, हे सुबल, मैंने इतने दिव्य लीला किए, इतने योगिक ये आपको दिखाए, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे, मैं क्या करूं? So Krishna gave an example of how his father had gone to a bigger theater and a big python attacked him. And so Krishna said, by him just his feet touching the python turned to what do you call a heavenly being. That is highly mystical. Krishna also explained that when Kaliya's poison has made the Gopals and the cows unconscious, he went there and cast his glance and resuscitated them. When there was forest fire, he just went there and swallowed the fire. He ate up the forest fire. What mystical opulence? What do you want to see, Subal? तो कृष्ण सुबल को बोल रहा है, तुमको क्या देखना चाहते हो? देखो, नंद महाराज को जब एक बहुत बड़ा अजगर ने निगल लिया था, मैंने जस्ट उसको स्पर्श किया तो तुरंत अजगर का ये हो गया, मुक्ति हो गया, और वो एक सेलेस्टियल हेवनली स्वर्गीय लोक के वासी में प्रवर्तित हो गया. आपने देखा नहीं? और कालिया, उसने इतना विष फैला था कि उसके विष से सारे गोप और सारे बछड़े मर गए थे, लेकिन कृष्ण बोल रहे, मैं जस्ट एक दृष्टिपात किया, मेरे ग्लांस डाला तो सब जिंदा हो गए. आपने देखा नहीं वो? और फॉरेस्ट फायर, और आपको याद है कि एक बार पूरा ये वन में आग लगा था, और मैंने जस्ट वो आग को पूरा संभाल लिया, पी लिया. आपने ये सब देखा नहीं? तो और क्या मैं मिस्टिक पावर दिखाऊं? Krishna further explained to Subal that, see, when Indra attacked Vrindavan, that he lifted gigantic Govardhan hill on his pinky finger and he held it up for 7 days, 7 nights. What mystic power, Subal, do you want me to exhibit to you? तो बोले, इंद्र ने जब वृंदावन के ऊपर अटैक किया था तो मैंने एक छोटी उंगली पे ये पूरा बड़ा पर्वत गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उठाया था. आपने वो देखा नहीं? तो और आप क्या देखना चाहते हैं? और So here Krishna is showing his mystic opulence. And Krishna discussed also mystic cities
in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, in his discussions with Uddhava. कृष्ण यहाँ अपने योगिक सिद्धियों के बारे में बता रहे और 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में भी कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं. If one becomes perfected in some yogic siddhi, he can pass through this wall without a crack. तो जब कोई योगिक सिद्धि में एक्सपर्ट हो जाता है तो ये दीवार से भी दूसरी जगह जा सकता है विदाउट ये दीवार को क्रैक किए बिना. You can walk above the earth. One of the cities, you can become lighter than the lightest and walk above the earth or walk even on water. तो एक सिद्धि है आप बहुत हल्के हो सकते हैं, आप पानी के ऊपर या हवा में चल सकते हैं. You can get whatever you wish just by raising up your hand and you will get it. आप जो भी इच्छा करें वो सब प्राप्त कर सकते हैं जस्ट हाथ ऊपर उठा के. In India, it's very common. If someone produces arches, he becomes God. भारत में लोग इतने मूर्ख हैं, कोई भी कुछ राख बना सकता है तो लोग उसको भगवान बोलते हैं. Or he produces gold in an egg, then, people say, oh, he's God. He's Bhagavan. कोई अपने योगिक शक्ति से सोना बनाता है तो लोग सोचता है अरे ये भगवान है. But Krishna is not that type of cheap Bhagavan. तो कृष्ण भगवान ऐसे ये साधारण भगवान नहीं है. It's not, is Navayovana. कृष्ण नव यौवन है. Sweet 16. कृष्ण हमेशा 16 उम्र के रहते हैं. So, people who doubt about Krishna's position, they get the bitter aspect of life because they may have to face some confrontation and become woefully defeated. तो कृष्ण के बारे में हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं साधारण लोग कृष्ण के समान नहीं होते, साधारण लोग बूढ़ा होते हैं, अलग होते हैं. So this purport is so interesting, very intriguing, because Krishna, displays, it shows how Krishna is full of mystic opulence, and sometimes he displays it. For instance, when in Vrindavan, one time they were preparing for some festival, and Krishna wanted some pearls for his beloved 2 cows. So he went to beg the gopis, and the gopis turned his request down. तो हम देखते हैं कि कृष्ण एक बार वृंदावन में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सब बहुत सजावट चल रही थी. तो कृष्ण गोपियों के पास जाते हैं और उनको अपने 2 बछड़ों के लिए पर्ल मोतियों का हार चाहिए था, लेकिन गोपी बोलते नहीं, आपको हम मोतियों का हार नहीं देंगे. So the gopis told him that these pearls are meant for the queens, are meant for the king's wife. You want these pearls for your cows? तो गोपी बोले ये जो मोती हैं ये रानियों के लिए और तुम ये बछड़ों के गायों को वो हार देना चाहते हो. So Krishna told them that, okay, Lalita was the one who was responded in that discussion. So he told them that, all right, now you can recognize that I am not a miser, and I will produce pearls. तो कृष्ण गोपियों को बोलते हैं, उधर ललिता गोपियों की तरफ से बात कर रहे थे तो बोले आप समझो मैं कुछ भिखारी नहीं हूँ, मैं अभी क्या करूँगा, ये मोतियों को उगाऊंगा. It's so funny because sometimes, Krishna is, from him everything is emanating, okay? But sometimes we have the resources
And Krishna wants to use those resources. And we say, wait a minute, I'll think about it. देखो ये भौतिक जगत का कैसा ये है हालत, भगवान कृष्ण से सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब भगवान कृष्ण को कुछ सेवा में यूज करना चाहते हैं तो लोग सोचे ठीक है मैं सोचता हूँ उसको यूज कर सकते हैं नहीं सकते भगवान की सेवा में. Everyone should understand that Krishna owns everything. And we should use whatever we have to voluntarily serve Krishna. सबको ये समझना चाहिए कि सबको जो चीज़ है भगवान कृष्ण की है और हमको सब चीज़ जो है भगवान कृष्ण की सेवा में उपयुक्त करना चाहिए. So Krishna went to meet his mother and requested to be given some pearls, that he wants to plant pearls in a garden near the Jamuna. And so the mother was surprised that, pearls don't grow from the ground. They come from a different source, not from the ground. But Krishna petitioned the mother. तो कृष्ण यशोदा के पास गए और यशोदा को बोले मुझे कुछ मोती दे दो, मैं वो जमीन में उगाऊंगा और उससे और मोतियां उगाऊंगा. तो माँ यशोदा बोली अरे ये मोती तो ऐसे जमीन से उगते नहीं, वो अलग जगह से आते हैं. The mother of Krishna, Mother Yashoda, she loved Krishna so dearly, so intensely. Krishna cannot ask for anything and go in vain. So she supplied what Krishna wanted. तो यशोदा तो माँ है और कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, तो कृष्ण ने बहुत जिद किया, मांगा मोती, तो यशोदा ने कृष्ण को मोती दे दी. So he went and developed a garden, planted all these pearls, and in few days they started sprouting. तो कृष्ण गए वो जो मोती लेके यमुना के पास और एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया और वो बगीचा में उन्होंने क्या किया, ये मोतियों को बो दिया और पानी दिया और कुछ दिनों बाद वो मोतियों से छोटे छोटे पेड़ आने लगे. And then in a couple of days later they start flourishing and the whole place was booming with irresistible scent, pearl scents all over the place. So that the news went to the gopis and they came to see it. तो और कुछ दिन के बाद क्या हो गया, वो जो सारे पेड़ में सुंदर सुंदर मोती आ गए और वो इतना खुशबूदार भी थे और बाद में ये जो खबर है सब गोपियों के पास गई, सब गोपियां देखने के लिए आ गए और अचंभित हो गए. तो पूरा गार्डन जो है कृष्ण ने बनाया हुआ सब मोतियों से भरा हुआ है. Krishna dragged his mother to come see it. So the mother came to see it and she was surprised. तो कृष्ण ने यशोदा माँ को भी बुलाया और दिखाया, देखो कैसे मोतियों का गार्डन. और यशोदा ने जब देखा वो भी बहुत अचंभित हो गई. The point I'm trying to make is everything in this world belongs to Krishna. We should voluntarily give everything to Krishna. Because if we don't give, he will manifest the things for his service anyway. तो ये कहने का बात ये है कि सब कुछ जो है भगवान का है और सब कुछ भगवान के सेवा में देना चाहिए. अगर हम भगवान के सेवा में नहीं देंगे तो एनीवे कृष्ण तो अपना मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो. So that was another mystical manifestation of Krishna's prowess. तो ये जो हम देखते हैं मोती बनाए भगवान ने, ये कृष्ण की ये योगिक शक्ति है. The Leela, the pearl Leela is a whole long story. It's a big book. And so much of details. ये जो लीला है, ये मोती का लीला, ये बहुत बड़ा लीला है. उसके ऊपर पूरा एक किताब है और उसमें बहुत सारे डिटेल्स है. The point I'm drawing here is that we should voluntarily give resources for the service of Krishna. तो कहने का बात है कि हमको स्व इच्छा से जो भी चीज़ है भगवान को सेवा में देना चाहिए. If we don't serve Krishna, Krishna will arrange for others to serve him. अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण एनीवे
अपनी सेवा का अरेंजमेंट कर लेंगे। So Krishna also produced some pears from the ground. Mystic power. कृष्ण ने तो जमीन से मोती उगाए। देखो ये दिव्य कृष्ण की योगिक शक्तियाँ। So he told Subal, this is just one of the things I just did. You're asking for my mystic power. तो सुबल पूछ रहे थे भगवान को, कृष्ण को, उनके योगिक सिद्धियों के बारे में। तो कृष्ण ने बताया आपने सब कुछ देखा है। Any comments or questions? किसी का कोई प्रश्न है? यस, हर्षित प्रभु। Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, there is one pastime comes where a Brahmana comes and he is crying that one of his son died, and then so continuously many sons died of that Brahmana, and then but there was no justice being given by the Sudharma Sabha in Dwarka, and then Arjuna took the side of Brahmana, and then he said, we will get back your sons. So in that place, it's commented that Arjuna became illusioned because Krishna was not taking any step, but Arjuna was taking. Arjuna was coming forward and he was saying something. So it was considered that Arjuna is in Maya in that place. So I was just thinking that, Arjuna is also present in Sudharma Sabha, and that Brahmana is also coming in Sudharma Sabha. So how they can be in Maya? How they can be in illusion? Thank you. It's a nice question. But like you rightly mentioned, and also in the purport, this basically is a lila. This is a lila. And it is showing how if the conditioned soul takes shelter of Lord Krishna, Arjuna is an eternally liberated soul. He tends to be in illusion on the battlefield of Kurukshetra, but Arjuna is never in illusion. It's meant for us to be able to understand that if even you come under the shelter of the Lord, one inattention, one figment of a second inattention can bring about devastation. Inattention. I'll give you an example. We are in the car driving. So the driver is a very senior devotee. He was driving. It was on a crowded road. And so he had someone. We're in another country. We travel by road to another country. And he had somebody say, Hare Krishna. So he turned. And immediately, at the moment he turned, the car, boom, he hit the next car in the front. Just a minute, a few seconds of inattention. So yeah, we may take shelter of the holy name, but we should take shelter of the holy name with rapt attention. We may take shelter of Lord Krishna's devotional service, but it's required that we have fixation on our services so that we don't become distracted by any factor. So yes, it's a good observation, it's a good insight you have on that, Leela. तो हर्षित प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे। हम देखते हैं सुधर्म सभा में एक बार एक ब्राह्मण आए थे, उनके पुत्र मर गए थे और बहुत पुत्र मर गए, और फिर कृष्ण ने तो कुछ किया नहीं, अर्जुन ने फिर कुछ करने का संकल्प लिया, और हम देखते हैं उसमें कि अर्जुन थोड़ा मोह माया में चला गया था। और ये ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो सुधर्म सभा में है और अर्जुन भी बहुत महान भक्त है, तो माया में कैसे जा सकता है वो? तो महाराज बोले कि ये तो भगवान का लीला है, तो लीला का पार्ट है। और दूसरा चीज़ है, वो भगवान की भक्ति में, भगवान के सेवा में हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए। एक थोड़ा भी इनअटेंशन यानी ध्यान इनअटेंशन होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक बहुत सीनियर भक्त थे, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते थे, लेकिन एक बार क्राउडेड जगह से वो गाड़ी चला रहे थे और कोई तो हरे कृष्णा बोला, तो उन्होंने थोड़ा इधर देख लिया और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया ना। तो हमको सतर्क होना चाहिए, भगवान का नाम जप में ध्यानपूर्वक नाम करना चाहिए। तो हम फिर माया से बच सकते हैं। Any other comments? Yes. Hare Krishna Maharaj. I have two questions. First question I'll ask related to the class. We have two conditioning, hunger and thirst. Related to hunger, actually I was recently contemplating what all ingredients we take from the society, either milk or ghee or any milk items, or either even the basic necessities are actually associated with the violence to the animals. If you could suggest how a devotee should lead the life, what is the ideal way of leading life now? If you could suggest that. मेरे दो प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न है कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन जीने के लिए हम बहुत चीज़ें दुनिया से लेते हैं। एक है कि दूध, मिल्क, और मिल्क दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, लेकिन आजकल तो बहुत जानवरों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए ताकि प्रॉपर जीवन जिए? Thank you very much. That is a very practical question. And Prabhupada had envisioned ISKCON having communities. And in these communities, we having our own cows, producing our own milk, organic milk products, so that this violence, we don't aid and abet violence on animals. प्रभुपाद की इच्छा था कि हम ऐसे कम्युनिटीज़ बनाए जहाँ हम हमारे खुद के गाय हो, उनको अच्छा तरह संभाले और उनका दूध और उससे दूध प्रोडक्ट मिले और जानवरों के ऊपर अत्याचार न हो। In America, there are all these organic products, organic cows, and the government is, organic milk, and the government is very strict with those type of things. तो अभी organic milk, yeah. Organic milk means milk that the cows are not fed with chemicals. आजकल ऑर्गेनिक मिल्क भी मिलता है, यानी जो गायों को जो अलग अलग रासायनिक खिलाया नहीं जाता, नेचुरल। And also cows that they don't take the milk, and if they can't produce milk anymore, then they kill them for meat. तो गाय दूध देती है, लेकिन दूध देना बंद किया तो उनको some of the factories they use the cow, produce the milk. If the milk is exhausted, they can't produce milk anymore, they kill it for meat to sell it. ओके, कुछ लोग अभी आजकल क्या करते हैं, गाय संभालते हैं और जब तक गाय दूध देती है तो गाय को रखते, गाय दूध देना बंद करते तो उनको मार के उसका मांस खाते। So the devotees are also buying from these people who use the cow for money,
and kill the cow again to sell the meat. So the purpose and vision that we should have our communities and have many cows, produce have milk products from our cows, and distribute these milk products to the masses, to help them, not only devotees, but then to help the masses to avoid the ugrakarmic effect of their participation in this violence to the cow. तो हम देखते हैं कि बाहर के लोग गायों को दूध निकालते हैं, जब दूध देना बंद करते गाय तो उसको मार डालते। तो इसलिए प्रभुपाद का इच्छा था कि हम भक्त लोग ऐसा कम्युनिटी तैयार करें जहाँ पे अपने गाय हो, उससे दूध हो, और भक्त लोग भी उससे अलग अलग दूध और दूध प्रोडक्ट बनाएं, और बाहर के लोगों को भी ये दूध दे, ताकि ये जो जानवरों के ऊपर जो अत्याचार होते वो बंद हो। I know the case situation in Gitanagari in Pennsylvania, where my Guru Maharaj was staying. That farm community, now they have developed the whole place like a modern sophisticated factory. They have machines for producing all different type of milk products, and the cows, they have all these big many cows there, and so that type of farm community is required if we want to save the world from the devastating effects of aiding and abetting violence on the cow. अमेरिकन में हम देखते हैं हिज ऑनर्स भक्ति स्वामी महाराज ने गीतानगरी फार्म शुरू किया था। तो अभी गीतानगरी फार्म में बहुत गायें हैं और बहुत गायों का दूध निकलता है, और अलग अलग दूध का अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनता है। तो ऐसे बड़े बड़े गायों का रक्षा करना और ये करना जरूरी है। So in India here also I've seen a number of Swamis, spiritual people, they're not from ISKCON, but their main service is cow protection. I remember we went to one place near Vrindavan, and they have thousands and thousands of cows. Thousands and thousands of cows. They produce all type of milk products and send them into the city for sales. तो हम देखते हैं कि भारत में भी बहुत से लोग हैं, और सन्यासी भी है, स्वामीज भी है, जो इस्कॉन के नहीं, लेकिन फिर भी उनका मेन सेवा है गोरक्षा। मैं वृंदावन में गया था, वृंदावन के पास में एक बहुत बड़ा गौशाला है, हजारों गाय है, और वो इतना दूध बनाते हैं और दूध के इतने प्रोडक्ट बनाते और शहर में बेचते। And imagine those type of situation if ISKCON is actively involved in those type of situation on a large scale, then millions and millions of people will be taking prasadam every day. अगर ISKCON अगर बहुत लार्ज स्केल पे ऐसे गौशाला वगैरह चलाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग ये प्रसाद उनको ग्रहण करने का मौका मिलेगा। So there are so many aspects of preaching that people could really explore and save the earth from being an endangered species. There are so many spiritual, devotional preaching strategies that we could implement to be able to save the world from devastation. ओके, तो बहुत अलग अलग प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम अपना के ये दुनिया को डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, संहार से बचा सकते हैं। Because killing of cows is one of the major ugrakarmic activities that is engulfing the planet and could cause even nuclear war or whatever. तो आजकल हम देखते हैं कि गायों का हत्या करना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और उससे हमको बचाना चाहिए दुनिया को। So does that address your question? Okay. और हाँ, और एक उनका प्रश्न है। One more question he has. Okay. What is the other question?
Maharaj, this question is little off track. Maybe I can ask personally. Maybe I'm thinking it's already late. But I'll just ask if you want relevant. You can answer this. I just have one question from long time. That what will happen to those devotees who worship Krishna in the Balya Rupa of Krishna, just like Damodar form of Krishna, just like Satyavrata Muni is praying to Damodar. Where do they go? Because in spiritual world, Krishna is not in Damodar form. He is in the Kaishora form there. So where do these devotees go? And It's in what? yes, Maharaj? Krishna is in what? Kaishora form. Okay, Yeah. okay. So where do these devotees take shelter in future? Yeah, but in the spiritual world, we find that Krishna is there and everything is complete. We may not know the exact details of the completeness, but someone, you see, we should be concerned about someone who is not worshiping Krishna. If someone is worshiping Bala Krishna, they will go back to Krishna, okay? They will go back to Krishna if someone is worshiping Krishna. In India, it's very common. People, young children, parents give them Bala Krishna for worship. Now, the situation could be better off if the children are also educated in eating habits, offering vegetarian food to the Bala Krishna, and then they take that as prasada. So, the point is that there are so many forms of Krishna. And whatever form that we worship, see, in our temples, we have Gauranitai here, okay? And the worship that we are giving to Gauranitai is basically that of Narayan worship. It's that of Narayan. But Krishna is not into those details. He's after our Bhava, Bhavagrahi Janandana. Krishna reciprocates based on our Bhava. And so, if someone is worshipping Bal Gopal, we may see it from external perspective. But what is the Bhava? That we may not know. That we may not know. So, essentially, we should be appreciative that someone is worshipping Krishna in any form, and we can encourage such a person. See, essentially, to go to Goloka, you need to worship Radha and Krishna. Now, in the other Sampradayas, it's only Lord Chaitanya who introduced the Madhurya Ras in the Gaudiya system. So, when we consider that other Vaishnava traditions, in most cases, they don't worship Lord Chaitanya. They don't worship Radharani. Where will they go? They go somewhere. They may not go to Goloka Vrindavan, but they go somewhere. The spiritual world, there are Vaikunthas, and each of the incarnations of the Lord has presides over a planet. Yeah, so each time we find someone is involved in the worship of any forms of the Lord, we should understand that that person is highly elevated. Because Krishna mentions in the Gita, Bahunam Janmanamante Jnanava Mam Prapadante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadula. So this is not something that we have to take very lightly. After many, many births, before one comes to that platform of even worshiping Krishna. So they are preparing for decarceration from the material world to be able to go into the spiritual world. The spiritual world is so vast, immeasurable. So yeah, someone, whatever form someone is worshipping, Lord Krishna mentions that yam yam vapi smaram bhavam tyajate antikaleva. Whatever we remember at the time of death, that we will attain. So if someone is worshipping any forms of the Lord,
There are all the Brahma Samhita mentions that there are the Lord, even the incarnations, they are so innumerable. In other words, the planets in the spiritual world where the Lord presides over, they are innumerable. But we do have Goloka, which is the supreme planet, and there are the various leelas are going on. But the other forms of the Lord, they also preside on other planets in the spiritual world. Like, Lord Ramachandra is not staying in Goloka Vrindavan. You mean worship of Lord Ramachandra is null and void? No. People worship Lord Ramachandra. Lord Ramachandra is Vishnu himself, is Krishna incarnation. And so we have this taste. I remember one of my assistants in Washington, D.C., he had this desperation to have big deities of Lord Ramachandra sit around in his house. And he's a professor. I said, you cannot do this worship, okay? Where's the time that you have? You have big deities, you have to attend to the deities every day. You have to do Abhishek. Where's the time you have? So I restrained him from doing that. But we have particular attraction for different forms of the Lord. Okay? हरिप्रसाद प्रभु पूछ रहे थे क्या होता है भक्तों को जो बाल गोपाल का बाल कृष्ण का सेवा करते, क्योंकि हम देखते गोलोक वृंदावन में तो कृष्ण नवयौवन रूप में है, तो वो किधर जाते हैं? तो महाराज बोल रहे जो कृष्ण के पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कृष्ण के पास जाएंगे। जो कृष्ण का भक्ति नहीं करे उनके बारे में सोचना जरूरी है। और कृष्ण ये यथा माम प्रपन्न, सब अपने अपने भाव की तरफ से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। और कृष्ण गोलोक वृंदावन में जाना है तो राधा कृष्ण का सेवा करना चाहिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। श्री चैतन्य महाप्रभु का अनोखा उपहार है कि उन्होंने राधा कृष्ण का सेवा दिया, जहाँ से हम गोलोक वृंदावन जा सकते। लेकिन जो राधा कृष्ण का सेवा नहीं करते, लेकिन वो भी जाएंगे कृष्ण के पास। बहुत आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ा है, अलग अलग लोक है, तो भगवान तो रेसिप्रोकेट करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अलग अलग लोग अलग अलग कृष्ण के रूप को सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनका भाव क्या है असली हमको समझ नहीं सकते। तो कृष्ण भाव के हिसाब से उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। और मृत्यु के समय जिस भाव में, जिस रूप में कृष्ण को स्मरण करेंगे, उस हिसाब से उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलेगा। हम देखते हैं कुछ कुछ भक्त लोग हैं राम की प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, तो राम का पूजा करते, तो वो वैकुंठ लोक में जाते, अयोध्या में जहाँ राम है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राम भी जो है कृष्ण की अवतार है, और अलग अलग भगवान के अवतार है। अलग अलग भगवान के अवतार का अगर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो वैकुंठ लोक जा सकते। तो एक अमेरिका में प्रोफेसर थे, और वो राम का बहुत बड़ा डीटीज रखना चाहते थे, तो महाराज से पूछ रहे थे, तो महाराज बोले आपके पास समय है क्या? क्योंकि डीटीज रखना है मतलब उनको समय देना, रोज अभिषेक करना, आरती करना, सब पूजा करना, आपको भगवान को अर्च विग्रह को समय देना पड़ेगा। तो एनीवे अलग अलग लोगों को अलग अलग भगवान के रूप के प्रति आकर्षण हो सकता है। Okay. You want to ask a question? Yes. Actually, Maharaj, I was thinking about when you are telling that if you are not attentive for a figment of second, then there can be devastation. So, point is to have such kind of unflinching attention seems quite impossible. And despite all this kind of distraction, hunger, thirst, lamentation, all these things are there. So, how is it possible that we can come to such kind of unflinching attention? And one more thing is that is it possible that remaining in material world
we can become freed from all these 6 kind of pangs of material existence? Is it possible? Or तो इन प्रभु पूछ रहे हैं दो चीज। एक एक है कि आप बोल रहे कि थोड़ा भी इनअटेंशन रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इतना अटेंशन देना तो असंभव लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और भूख है, प्यास है, अलग अलग पीड़ा है भौतिक जगत में, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 100% अटेंशन देना तो मुश्किल है। और दूसरा चीज़ है, ये भौतिक जगत में रह के ये सब भूख प्यास अलग अलग ये षड पीड़ाओं से मुक्त होना संभव है क्या? So, thank you. That's a nice, insightful question. You see, Prabhupada, someone asked question, Prabhupada, how long it would take for someone to to attain Krishna consciousness. And Prabhupada said, the flip of a second. तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए कितना समय लगेगा, तो प्रभुपाद बोले जस्ट 1 सेकंड। So, we understand that this is the material world and it's very challenging to be inattentive. And inattention, even in the chanting of Krishna's name, is one of those very important challenges that we need to avoid if we want to progress in our devotional lives to be expedited. तो हमको अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ये इनअटेंशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और उसके And so the example I gave regarding the accident, I mean, it just happened in a flip of a second. The तो guy ran into a problem. मैं उदाहरण दे रहा था कैसे एक कुछ क्षण का ध्यान हटा और एक्सीडेंट हो गया। So it just shows that we need the mercy of the Lord. In the Damodara Lila, when Mother Yasoda tried to tie up Krishna, there was always a lack of the rope, but 2 fingers. And the explanation of the acharyas is that yes, our effort is important, our effort, our input is required, but we also need the mercy of the Supreme Lord, we need the mercy of the devotees, we need the mercy of the spiritual master. तो हम देखते हैं दामोदर लीला में कैसे दामोदर लीला में मदर यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हमेशा वो रस्सी कम पड़ रही थी 2 उंगली। तो उसमें हम देखते हैं आचार्यगण बोलते 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक है हमारा प्रयास और भगवान का कृपा। तो वही इस चीज़ में भी लागू है कि हमको अटेंटिव रहना है जप में, तो हमको प्रयास करना चाहिए। और भगवान का कृपा, गुरु महाराज का कृपा, वैष्णव का कृपा, ये भी बहुत जरूरी है। Now, Prabhupada also has mentioned that he has the keys to the back door keys of the spiritual world. तो प्रभुपाद ने बोला है कि उनके पास है भगवत धाम जाने का पिछले का रास्ते का चाबी भी है। And those who remain in his movement, the International Society for Krishna Consciousness, and serve, follow the 4 regulative principles, and chant the holy names at least 16 rounds every day, Papa has given a promise that he will open the back door and let that person come in. तो प्रभुपाद ने ये वचन दिया है कि जो भी पूरा जीवन ISKCON में रहेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, तो उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम का पिछला जो रास्ता है, दरवाजा है, वो खोल के उनको अंदर ले लेंगे। So the mercy that is explained in the Damodara Leela is also demonstrated in Prabhupada's statement that those who serve,
follow the regulative principles, and chant the holy names, at least 16 rounds every day, they will have access to the doors of liberation. तो प्रभुपाद की लीला में भी ये दो चीज़ें आ जाता है कि अगर हम हमारा प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, हम अपना प्रयास करें तो प्रभुपाद का कृपा रहेगा और प्रभुपाद कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं. So you don't need to, don't kill yourself right now, okay? Don't kill yourself with anxiety. तो आप बहुत चिंता से परेशान मत होना. Prabhupada has given a promise and he's not bluffing. प्रभुपाद ने वचन दिया है और वो प्रभुपाद झूठ नहीं बोल रहे. And we have seen so many devotees in ISKCON. I remember the case of one of और हमने बहुत से केस देखे हैं इस्कॉन में जो भगवत धाम गए. One devotee in Mumbai, he was not considered a staunch sadhaka, but the activities surrounding his passing away, it shocked everybody. His Guru Maharaj was personally there to process his transition. Devotees were there chanting until he left the body. So people were surprised that this devotee attained this type of great mercy. But we can't judge people. तो मुंबई में एक भक्त थे, तो देखा कि वो कैसे अपना शरीर छोड़ गए. तो उनके गुरु महाराज पर्सनली थे उनको मृत्यु के समय, और सब भक्त लोग थे, कीर्तन कर रहे थे और उनको इतना कृपा मिला और वो कैसे भगवत धाम चले गए. तो हम किसी को बाह्य दृष्टि से जज नहीं कर सकते. It doesn't mean that we shouldn't be serious. Oh, Vasudeva Swami mentioned this the other day. I'll just live a loose life. I'll get a mercy anyway. इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम ढीला ढाला रह सकते कि अरे वासुदेव स्वामी ने बोल दिया तो शायद मुझे भी कृपा मिल गया. नहीं, हमको भी सीरियस बनना है, लेकिन ज़्यादा चिंता भी नहीं करना है. No, we should be very serious with our sadhana. We should be very serious with our service attitude. We should be very concerned, loving, and caringly disposed to the devotees around us in our communities. तो हमको बहुत सीरियस रहना चाहिए साधना में, सेवा में, और भक्तों के साथ भी बहुत प्रेम में संबंध रखना चाहिए. We should never try to put any devotee in anxiety. हम कभी भी किसी भक्तों को तकलीफ में नहीं डालना चाहिए. Because then we are creating trouble for ourselves. अगर भक्तों को तकलीफ देंगे तो हमारे जीवन में तकलीफ आएगा. Srila Prabhupada ki जय. Any last comment? और किसी का आखिरी कुछ प्रश्न या मत है? I live today and hopefully before the end of Kali Yuga we'll meet again. आज मैं मायापुर जा रहा हूँ और कृष्णा विलिंग हम कलयुग खत्म होने से पहले और एक बार मिलेंगे. I'm just joking. मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ. I have some programs at Karapur IIT on the 28th, some presentation on self-management for high productivity. तो Doesn't sound devotional, right? तो 28 तारीख को एक IIT खड़गपुर में प्रोग्राम है. Self-management for high productivity. That topic doesn't sound devotional, right? सेल्फ मैनेजमेंट फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, ये जो टॉपिक है भक्तिमय लगता नहीं है ना. So, but we will discuss about spiritual phenomena, devotional culture. आध्यात्मिक कल्चर के बारे में और डिवोशनल चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे उसमें. Everything in management and leadership has some element of devotional concepts and constructs. सब आध्यात्मिक
सब लीडरशिप मैनेजमेंट चीज़ में आध्यात्मिक चीज़ का कुछ जगह है. And then one devotee, Aradhya Bhagawan, is also arranging some program at Kolkata University. He said he's got some confirmation, so he wants me to come to Kolkata for 7 days for some programs, including that university program. But we have to schedule the days with him when I get back to Mayapur. तो और एक भक्त है जो आराध्य भगवान प्रभु, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं. तो जब मैं मायापुर जाऊंगा तो डेट वगैरह फाइनलाइज करूंगा और फिर उस हिसाब से हम फिर से आएंगे. So hopefully we see you again soon. आशा करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे. हरि बोल. Srila Prabhupada ki जय. Srimad Bhagavatam ki जय. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki jai. So we'd like to thank His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj for his wonderful association, and he extended himself to give his valuable association during Janmashtami and proper Appearance Day. And so, did you all enjoy his association? Did you all benefited from his association? So we are extremely grateful to you, Maharaj, for so His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki jai. So let us thank Maharaj by loudly chanting 3 times Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.